लास्ट क्लास का रिवाइज करो एक बार जल्दी से। हमने दिस वाज क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स। यहाँ से हमने v निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट किया था सेकेंड इक्वेशन में, एंड वी गॉट द वैल्यू फॉर r। r का क्या फॉर्मूला आया था, किसी को याद है? m k सबके टर्म में आएगा ना, इन टर्म्स ऑफ k r। नहीं क्या फॉर्मूले मैंने डिराइव किया था, वो क्या आया था? हाँ, ये ना। सो द कांस्टेंट टर्म इनसाइड द ब्रैकेट वर h square, h is Planck's constant. Then we have 4 pi square m k e square is equal to n square by z. This is what we did in the last class, है ना? और इस कांस्टेंट की वैल्यूज भी हमने सब्स्टिट्यूट की थी फिर, एंड आफ्टर दैट it came out to be 0.529 n square by z angstrom. So this was the formula for the radius, and you can see that radius is directly proportional to the principal quantum number n. N could be 1, 2, 3, 4, and inversely proportional to the atomic number. Bohr's radius, but this formula will hold true only for hydrogen like atoms, जो मैंने बताया था पिछली बार भी, and its principal quantum number 1, 2, 3, 4, and so on. Z is atomic number of the hydrogen like nucleus. The second one is speed of electron. Since electron is rotating in circular path around the nucleus because of centripetal force provided by the electrostatic force of attraction between the nucleus and the electron, right? So if you want to find out speed of electron, हम क्या करेंगे? Let's substitute radius over here in the formula number 1. Substituting r is equal to h square by 4 pi square mk square into n square by z in equation number 1. So we'll have mvr. R is h square by 4 pi square mke square n square by z is equal to nh by 2 pi. So the angular momentum is integral multiple of h by 2 pi में. In place of the radius, we have substituted this. Now what? एक h कट जाएगा, एक n कट जाएगा, मास भी कट जाएगा, and then we can solve it for speed v. So v will be equal to 4 pi square ke square by, so 2 pi also you can cancel out, 1 pi, another 2. So it would be 2 pi ke square by h, right? And this would be z by n. देखो जरा, ये आएगा speed of electron in the nth orbit when you substitute r
इन MVR इक्वल टू NH/2 पाई, एक NH कट गया, 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, एक पाई कट जाएगा, M से M कट जाएगा. Now what if you substitute these values? If I multiply by C and divide by C. C is speed of light. मैंने क्या किया, C से मल्टीप्लाई कर दिया, C से डिवाइड कर दिया. And if I solve this particular value, it comes out to be C by 137 Z by N. So this is the formula for speed of electron in the nth orbit. Speed of electron in the nth orbit. Over here, C is speed of light. C is 3 into 10 to the power 8 meter per second. C is speed of light. C divided by 137 Z by N. N is principal quantum number, Z is atomic number. So as you can see that speed of electron in the nth orbit is directly proportional to atomic number and inversely proportional to the principal quantum number. ऐसा क्यों हो रहा है? Because when Z is more, then electrostatic force of attraction will also be more. Z ज्यादा होगा, so electrostatic force of attraction भी ज्यादा होगा, as a result speed of electron भी ज्यादा होगी. ठीक है? और n ज्यादा होने से क्या होगा? If n is more, then orbit would be away from the nucleus. As a result, force will decrease. Larger the n, lesser the force. As a result, speed will decrease. So what if you find speed of electron in the first orbit of hydrogen? करके देखो जरा. Suppose for hydrogen atom, we find speed of electron in the first orbit. तो कितना आएगा? Vn is equal to C by 137 1 by 1. So 300 by 137 into 10 to the power 6. The speed of electron in the first orbit of hydrogen is this much. It'll be approximately 3, is it? No, not 3. फिर 2 point 2.18. some 2.10 to the power 6. So this kind of speed of electron is there in the first orbit of hydrogen atom. Z is 1 for hydrogen. N को हमने first 1 substitute कर दिया because it is the first orbit. Question लिखो. Find speed of electron. Find speed of electron in the fourth orbit. Find speed of electron in the fourth orbit of triply ionized lithium. Triply ionized lithium atom. Find speed of electron in the fourth orbit of triply ionized lithium atom. कर लो. क्या हुआ इसमें, आज तुम भी ऑनलाइन? यस सर. रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी नहीं. अच्छा, क्या आंसर?
ट्रिपली आयनाइज्ड लिथियम का मतलब हुआ लिथियम इज एटॉमिक नंबर लिथियम कितना होता है? 3। थ्री। सो ट्रिपली ट्रिपली आयनाइज आयनाइज्ड फिर। लिथियम का एटॉमिक नंबर हो जाएगा Z इक्वल टू 3। एन की वैल्यू 4 है, Z को 3, एन को 4 डाल दो इसी फॉर्मूले में। N4 कैसे? फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ओके। बिकॉज द क्वेश्चन वाज फाइंड Z को 3 इंटू 3 क्यों? Z तो 3 एटॉमिक नंबर। N is orbit or number of electrons? हाँ, N is orbit or number of electrons? नो, N इज द ऑर्बिट, N इज Okay, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, okay. N इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड शुड बी, आई थिंक शुड बी डबली आयनाइज्ड हीलियम, है ना? बिकॉज ट्रिपली आयनाइज्ड में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचेगा। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। इट शुड बी डबली आयनाइज्ड बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो जब तुमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, इट बिकम हाइड्रोजन लाइक एटम। Doubly ionized lithium would have only one electron, so it'll behave like hydrogen like. तो Z3 हो जाएगा, Z will be always atomic number and is always the principal quantum number. तो N is 4, fourth orbit. C is 3 into 10 to the power 8 by 137, and this is Z is 3 by 4. ये आएगा। हम्म। Will be 2.92 into 10 raised to power 6. कितना? 2 पॉइंट 92 into 10 raised to power 6. 2 नहीं आएगा, 3 1.9 समथिंग ऐसे कुछ, 1 पॉइंट, इसे 900 बाय 548 इंटू 10 टू पावर 6। 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी 4/137। क्यों? Z बाय एन है ना, Z तो 3 है, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। ओह, ओके। एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फोर्थ मतलब ऑर्बिट। अनन्या कर लिया? तो 1 पॉइंट कितना आ रहा है? 1.8। हाँ, 1.63। 1.6 something. ओके, 1.64। ठीक है। 1.64 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ रहा, अब यही आ रहा है। यस सर। ऑल राइट, नेक्स्ट, फाइंड फाइंड रेशियो ऑफ स्पीड, find ratio of speeds of electron in the fifth orbit of triply ionized, fifth orbit of triply ionized beryllium to that of second orbit of singly ionized helium. Ratio of speed of electron in the fifth orbit of triply ionized beryllium to the second orbit of singly ionized helium. ऑर्बिट हमेशा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n होगा, Z will be the atomic number of the ion or the atom जिसका तुम वो निकाल रहे हो। बेरिलियम का Z4 होता है, हीलियम का Z2 होता है। इसका n हो जाएगा 5 और इसका n सेकेंड ऑर्बिट, n विल बी 2। दोनों का रेशियो ले लोगे तो C/137 कट जाएगा। दिस फॉर्मूला यू अप्लाई ट्वाइस। तो V5 फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम डिवाइडेड बाय, सर 4:5 ही है क्या?
4:5? होना चाहिए। That's Hmm. So fifth orbit of beryllium divided by second orbit of helium. So C by 137 दोनों में कट जाएगा. And this is Z by N. Z is 4 and this is 5. C by 137, 2 by 2. So 4:5 is the answer. So the answer is 4:5. Now the next part, we have done the radius of Bohr's atomic atom and then speed of electron also. For hydrogen, Z1 हो जाएगा. Next is energy of electron in the nth orbit. Third part, we are deriving now formula for energy. Energy of the electron. Since electron is rotating around the nucleus, it has kinetic energy. At the same time, it is a system of two charges, one positive, another negative. It has potential energy also, electrostatic potential energy also. So the system has kinetic energy. The electron has kinetic energy, which is how much? Half mv square. लेकिन we have just seen that mv square by r कितना था? kze square by r square. Centripetal force is equal to electrostatic force of attraction. As a result, एक r कट जाएगा. तो mv square can be replaced by kze square by r. तो kinetic energy is kze square by 2r. So kinetic energy of electron is kze square by 2r. Now what about potential energy? If you remember, electrostatic potential energy का formula क्या है? K Q1 Q2 by R. R. Potential energy of two charges separated by distance R. If two charges are separated by distance R, then this is the formula. यहाँ पे क्या हो रहा है? K एक चार्ज ZE है, दूसरा चार्ज -E है. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. Divided by R. So potential energy of the system is minus kze square by R. This is potential energy. लिख लो. दोनों को ऐड कर दो. दोनों को ऐड करके you'll get the formula for total energy of the electron. करना. Let's find total energy of. So total energy will be kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy is kze square by 2r minus kze square by r. So the energy of electron will be minus kze square by 2r. Total लिख लो. So we have kinetic energy kze square by 2r. We have potential energy kze square by r with negative sign. And we have total energy kze square by 2r with negative sign. If you look at these three formulas, so the relation is this, that total energy
is equal to minus kinetic energy, which is equal to potential energy by 2. हो रहा है ऐसा? You might come across MCQs on the basis of this formula. The same result was for planets and the satellites also. Nature loves symmetry. Inside the smallest part of a material like atom, we have the same kind of result as we did discuss for satellites and planets in the 11th class. If you remember in Kepler's laws of motion, gravitation, the same formula was there. Total energy of the satellite was negative of kinetic energy equal to potential energy by 2. अब टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में लेट्स सब्स्टिट्यूट आर का फॉर्मूला. दिस इज एनर्जी इन द nth ऑर्बिट माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय 2r. व्हाट वाज आर? नहीं, उसके टर्म में निकालो, फॉर्मूले के टर्म ये आर था. एच स्क्वायर एन स्क्वायर है ना, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो आर वाज एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर एम के ई स्क्वायर. जेड भी होगा शायद, ये था, चेक करो. ठीक है, देख लेना, मान गलती हो जाएगी. 4 पाई स्क्वायर एम के ई, ठीक है, ही हमने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वुड बी माइनस, ये कट जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू द पावर 4 बाय एच स्क्वायर and this would be z square by n square. Just check this out. ये आ रहा है energy of electron in the nth orbit, total energy 2 pi square m k square k e to the, k square e to the power 4 by h square. और इन सब कांस्टेंट के वैल्यूज अगर तुम सब्स्टिट्यूट कर दोगे एंड अभी तो एनर्जी जूल में आएगी ये वाली, एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, योर आंसर वुड बी दिस. This is an electron volt. If I substitute all the constants, so this is the formula for energy. Energy of the electron in the nth orbit is minus 13.6 z square by n square electron volt. And we have seen the postulates that as long as electron is orbiting in the stationary orbits, it will not radiate or any kind of energy. But if a suitable amount of energy is given to the electron, it will jump to higher orbit. We call it excited state. And when it jumps back to the original orbit, it will release some energy in terms of frequency or wavelength called spectrum. तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होगा? For hydrogen atom, Z would be 1. So let's do one thing. Let's find out what will be the energy of electron in the first orbit. This way we have energy. And these are the orbits. This is the second orbit. Find the energy. Third orbit, fourth orbit, fifth orbit. N को 1, 2, 3, 4, 5 substitute करो. Tell me the answer for
energy of the electron. n को 1 डालोगे, that is the ground state. In the ground state, energy of the electron is n को 1 डाल दिया तो कितना आएगा? -13.6 है ना, यहाँ लिख देते हैं. So E1 is -13.6 electron volt. And since energy is negative, what does it signify? It signifies that electron is bound by the nucleus. So in the ground state, energy of the electron is 13.6 electron volt. So, हाँ, so bound to the nucleus in the sense, but that is not leaving the nucleus. It is rotating around the nucleus because of force of attraction. तो नेगेटिव क्यों है फिर वो? Negative का मतलब ये, whenever the force is attractive, energy would be negative. जब भी force positive attractive होता है, energy would be negative, because this U is always minus df by dr. Yeah. और अगर चार्जेस सपोज मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो फिर क्या होता है? एनर्जी पॉजिटिव होती मतलब फोर्स वुड बी रिपल्सिव, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. Because of the positive attractive force, nucleus is binding the electrons with it, वरना इलेक्ट्रॉन एस्केप कर जाएगा. So लेकिन find नेगेटिव कैसे? Does the nucleus charge has to do negative है ना, work? see charge also negative है ना. If you go by अच्छा, ओ ओके strictly ओके the ओके, formula k q1 q2 by r, ठीक है, ओके one charge is positive, another charge is negative. ओके. करो, फिफ्थ ऑर्बिट तक एनर्जी निकालो, 2 डेसिमल प्लेसेस, उनको याद भी करना है. भव्या, मार्क्स मिल गए फिजिक्स में? भव्या लगता है सो गई है. सेकंड में कितना आ रहा है? -3.4. ओके. तो सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज -3.4. यस. थर्ड का निकालो. -1.51. माइनस फोर्थ ऑर्बिट -0.85. एंड द सिक्स्थ. 6 of them. यस सर. क्या, कहाँ तुम? सर मैं पानी की बोतल भरने गई थी. अच्छा अच्छा, तो नींद आ रही है लगता है. नहीं नहीं. कौन से चैप्टर कर रहे हैं हम, पता है? हाँ पता है. बताओ. एटम न्यूक्लियर वाला. अच्छा, मार्क्स मिल गए तुम्हें? कल पता चलेंगे. अच्छा अच्छा. फिफ्थ ऑर्बिट में कितना आ रहा है? -0.54. राइट. तो नाउ टेल मी, एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एनर्जी कम हो रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है. Energy is increasing. The minimum energy is there when the electron is closest to the nucleus. अब क्या होगा? If we provide enough energy, suppose you provide 10.2 electron volt of energy, electron will jump from the ground state to the second orbit. अगर हम इलेक्ट्रॉन को 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोवाइड करें, देखो 13.6 में 10.2 ऐड करो तो -3.4 आ जाएगा, तो मतलब इलेक्ट्रॉन विल जंप टू द सेकेंड ऑर्बिट. अगर उसको हम और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करें तो हो सकता है इट विल जंप टू द थर्ड ऑर्बिट.
सेकेंड ऑर्बिट में अगर जंप करता है उसको बोला जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एंड जब वो एक्साइटेड स्टेट से वापस आएगा, सपोज हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सारे के सारे ग्राउंड स्टेट में आते हैं, तो सर्टेन सेट ऑफ वेवलेंथ वुड बी रिलीज्ड. So that amount of energy released whenever electron is jumping from higher orbit to lower orbit, अगर n2 ऑर्बिट से वो n1 ऑर्बिट में जा रहा है, ऑर्बिट n2 से n1. So if electron jumps from excited state to lower state or ground state, some set of energy would be released and that energy would be this much. तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना आएगा? En2 will be how much? Minus 13.6 Z square by N2 square, right? Then minus En1 कितना है? Minus 13.6 Z square by N1 square. तो एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कितना हो गया? 13.6 1 by N1 square minus 1 by N2 square into Z square. ये फॉर्मूला लिख लो. Whenever electron jumps from higher orbit to the lower orbit, this much amount of energy is released. N1 is lower orbit, N2 is higher orbit. वही है, similar to chemistry. And इस energy के से related there will be some frequency also, wavelength also. So what we can do is we can find that also. Energy is hc by lambda. 13.6 ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है. I can convert this into joule. 13.6 into 1.6 into 10 to the power minus 19. This is 1 by n1 square minus 1 by n2 square into z square. अब ये 1 by lambda would be the wavelength by h into c. If I substitute these constant and simplify this, I can find wavelength released, because every energy packet would be corresponding to some energy, some wavelength. So the term inside the constant, I mean this curly bracket में जो term है वो constant है, and this is equal to, याद है किसी को क्या होता है ये? इसे Rydberg constant. Rydberg माइनस 1.09677. नहीं, माइनस नहीं होगा. Rydberg constant हाँ, पॉजिटिव हुआ 109677. 1 by lambda 1.096 10 to the power 7. 1 by n1 square minus 1 by n2 square z square मीटर इनवर्स होगा ये, ठीक है, बिकॉज 1 by lambda है ना. तो इसको रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है. रिडबर्ग कांस्टेंट इज 1.096 10 to the power 7 per meter. So this is the wavelength released. तो जब भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आएगा, some wavelength, some frequency would be released, and we have a name for it also. Like अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो उसको बोला जाता है लाइमन सीरीज. So what is Lyman series? Series of wavelengths released when electrons are jumping from higher state to ground state. N2 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. So the set of wavelengths will be called Lyman series.
लाइमन के बाद कौन सा होता है? सो वेवलेंथ रिलीज वुड बी 1/λ, रिडबर्ग कांस्टेंट 1/n1 स्क्वायर, तो 1/1 हो गया, and 1/n2 square, and z square also for hydrogen z would be 1, n2 would be 2 3 4 5. If I take n2 as 2, it will be called first of Lyman. And the wavelength release will be longest. It will correspond to maximum wavelength or minimum frequency. अगर इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहा है, ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, वेवलेंथ रिलीज वुड बी द लॉन्गेस्ट बिकॉज एनर्जी लीस्ट है. एनर्जी लीस्ट का मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम होगी बिकॉज ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है ना. तो लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम हो जाएगा बिकॉज एनर्जी इज मिनिमम, फ्रीक्वेंसी वुड बी मिनिमम. बट इफ एन टू इज इंफिनिटी फिर क्या होगा? दिस वुड बी corresponding टू lambda minimum or maximum frequency. And if you find these set of wavelengths for hydrogen, z को अगर हम 1 डाल दें तो ये सारी की सारी wavelengths correspond to UV region. इनकी जो frequency होती है, it is corresponding to UV region. Ultraviolet region. हाँ, क्वेश्चन लिखो एक. Find maximum wavelength, find maximum wavelength and maximum frequency. Find maximum wavelength and maximum frequency for the Lyman series, for the Lyman series of hydrogen atom. मैक्सिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दोनों निकालना है. फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, कर लो. लैम्डा मैक्स एंड म्यू मैक्स दोनों निकालना है. सर आप म्यूटेड हो. रिडबर्ग की वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो. Z1 for hydrogen. So 1 by lambda 1.096 10 to the power 7. अब पहले लैम्डा मैक्स कर रहे हैं ना.
1/1, n2 को 2 डाल दोगे, 2 स्क्वायर हो जाएगा, z हो जाएगा 1। So lambda would be 4 divided by It will be 7 into 10 raised to power minus 8. कितना? 7 into 10 raised to power minus 8. नहीं नहीं, 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है? लैम्डा को इन्वर्स भी तो कर देंगे ना। 1.21 into 10 raised to the power 7. यस, रेसिप्रोकल भी तो करोगे। सो लैम्डा मैक्स विल बी 1.2। यस, सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। और अगर मैं मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकालनी होती तो फिर हम इसका वी कुड हैव यूज्ड ई सी इक्वल टू न्यू लैम्डा। लैम्डा पता है, न्यू पता लग जाता। सो दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगी। नेक्स्ट पार्ट करो अब इसका। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करोगे? पहले तुम लैम्डा निकाल लो, या फिर इसको कन्वर्ट कर लो फ्रीक्वेंसी में। फ्रीक्वेंसी के लिए व्हाट यू कैन डू इज, यू नो दैट सी इज इक्वल टू एफ लैम्डा, है ना? सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है, तो 1/λ इज न्यू बाय सी। तो 1/λ को न्यू बाय सी से रिप्लेस कर दो, तो न्यू मैक्स विल बी रिडबर्ग 1/1 स्क्वायर। n2 कितना होता है? इन्फिनिटी होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट, तो इससे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालो। वन बाय इन्फिनिटी 0। This is quite high frequency, 3.28, approximately 10 to the power 15 hertz. This will be in ultraviolet region, UV region. So that's Lyman series. And if you've been given find second of Lyman में क्या करोगे? N2 will be 3, third of Lyman 4, and so on. But N1 would be 1. N1 फिक्स्ड होगा। लाइमन सीरीज में सारे इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट में ही आएंगे। So set of wavelengths released will be falling in the UV region. Lyman series के बाद next is hmm तो हाँ 3.288 ओके। नेक्स्ट इज बामर। बामर में N1 होगा 2, N इक्वल टू 3 से, N2 3 से स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ बामर हो जाएगा, N2 विल बी 3, एंड दिस इज द फॉर्मूला। This time electrons are jumping from higher orbit to the second orbit.
the set of wavelengths released are called Balmer, and इनकी जो frequency है, it falls in the region, visible region. The frequency is basically in the visible part of the spectrum of light. That part of the transverse waves which are due to which we are able to see the world around us. Visible region में fall करता है. N2 जब 3 होगा तो बिकॉल फर्स्ट ऑफ बार्मर, N2 4 होगा तो सेकेंड ऑफ बार्मर, N2 इन्फिनिटी होगा तो मिनिमम वेवलेंथ और म्यू मैक्स हो जाएगा. इक्वेशन करते हैं. फॉर singly ionized helium, find lambda minimum and nu minimum. For singly ionized helium ion, find lambda minimum and nu minimum. Z will be taken as 2 because helium का Z2 होता है. Nu minimum होगा when N2 is 3. Frequency minimum का मतलब हुआ lambda x should be maximum. So that's possible only when energy is the least. 2 and 3 करना पड़ेगा तुम्हें. क्या रहा है इसमें? करा नहीं मैंने अभी। करो, सब्स्टिट्यूट करो फॉर्मूले में. जब N2 को 3 डालोगे तो न्यू मिनिमम आएगा. न्यू मिनिमम के लिए N2 शुड बी 3, 9 हो जाएगा. N2 तो तुम्हारा 4 है ही सही. So new minimum would be Rydberg constant 1.096 10 to the power 7, speed of light 3 into 10 to the power 8 into, you have to also substitute Z k value. Z for helium is 2. So it will be 2 square. So this would be 5 by 36 into 4. 4 से ही कट जाएगा. कितना आ रहा है देखो. Sir, 1.826. Okay. 10 to the power 15. Yes. 1.8.
Yes, sir. 1.8 10 to the power 15 hertz. ठीक है. And what about lambda minimum? Lambda minimum के लिए you have to put n2 is infinity. So 1 by lambda minimum is Rydberg constant 1 by 4 minus 1 by infinity into z square, which is 4. 1 by infinity 0, 4 से 4 कट जाएगा. So lambda minimum would be 1 by Rydberg constant. 0.912, sir. 0.912 10 to the power minus 7. ठीक है. So this was Balmer series, which falls in the visible part of the spectrum. Next is Paschen. Paschen में क्या होगा? Electron will be jumping from higher orbit to the third orbit. So that will be Paschen series. So, हाँ. sir, like something like this would be the same reason why two sources of light cannot be coherent, right? Uh, wave optics के अंदर एक क्वेश्चन होता था ना कि हाँ, two because sodium electron lamps. is jumping from higher orbit to lower orbit and it gives away the light, which is not controllable. We can't control which, orbit it will fall into. Okay, So that's why the frequency will not remain the same. If we make the frequency the same, then the time lag cannot be constant. So yes, this is a reason. ठीक है. Paschen series में N2 will be 3 and 1 will be, N1 would be 3, no? N2 will be 4, 5, 6 and so on. And when N2 is 4, it will be first of Paschen. Paschen series will fall in near infrared. Lyman, Balmer, Paschen. Then you have bracket. You can write the formula yourself. P fun, then Humphrey. All these fall into infrared region. Mid-infrared Paschen. Paschen is near infrared, then bracket is mid-infrared, and then P fund is far infrared, like that. क्वेश्चन में नॉर्मली ब्रैकेट तक कर लोगे तब भी चल जाएगा. What if you provide 13.6 electron volt energy to electron in the ground state? तो क्या होगा वो? If you provide 13.6 electron volt of energy in the electron when it's at ground state, it will leave the hydrogen atom. But the atom will get ionized. So that energy is also called ionization energy. Ionization energy, amount of energy required
to knock off electron from the atom of an element. Ionization energy is amount of energy required to knock out electron from the atom of an element. So Bose could explain many things with the help of his Bohr's atomic model. But again, there were some issues which it could not explain, like if we talk about atoms with higher atomic number. Higher atomic number के elements का spectrum it could not explain. These are the shortfalls of Bohr's atomic model. लिख लो. Shortfalls or shortcomings of Bohr's atomic model. It could not explain structure of atoms having higher atomic number. Second, it could not explain splitting of spectrum under magnetic field called Zeeman effect. Splitting of spectrum under magnetic field. Similarly, it could not explain splitting of spectrum under electric field. इसको बोला जाता है स्टार्क इफेक्ट. तो एक बार रिपीट कर सकते हो स्टार्क इफेक्ट? हाँ, एक बार स्टार्क इफेक्ट रिपीट कर सकते हो? स्टार्क, हाँ. It could not explain splitting of spectrum lines, spectral lines under electric field called Stark effect. ठीक है सर, थैंक यू. So because of these reasons, Bohr's atomic model, kind of failure was there. So this is all there in atom. Now we talk about nucleus. As you've seen that inside any atom, we have protons and neutrons, which account for the almost the entire mass of an atom. We have already discussed atomic number. कर लिया था ना हमने शायद? Atomic number क्या होता है? Number of protons inside the nucleus or electrons in unionized atom, है ना? Atomic number. Then we also discussed mass number. What is mass number? Mass number is sum of number of protons and number of neutrons. It's always a whole number. And you have neutron number also. Number of neutrons in the
nucleus. Size of nucleus we have already seen is approximately 10 to the power minus 15 meter, and this Rutherford found using the formula for impact parameter and distance of closest approach, whereas size of atom was 10 to the power minus 10 meter, approximately 1 lakh times more than size of nucleus. If size of nucleus is that of the size of the football, then atom would be size of Himalaya. That kind of difference is there. A lot of empty space. Isotopes, isobars, and isotones. ये केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तुम लोगों ने. So what are isotopes? शनाया, isotopes क्या होते हैं? Same atomic number, different? Yes, लिख लो. Isotopes of an element. Isotopes of an element are atoms having same atomic number, but different mass number. Same atomic number, but different mass numbers. These isotopes of an atom, isotopes of an element, isotopes of an element have same kind of chemical properties, but different physical properties. They occupy These occupy the same place in the periodic table. Isotopes occupy the same place or position in periodic table. Because modern periodic table में elements are arranged in terms of atomic number. हाइड्रोजन के कितने isotopes हैं? 3. हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन एंड ट्रीटियम, है ना? 1H1, किसी भी एलिमेंट को you represent like this. This is atomic number and this is mass number. दोनों का डिफरेंस विल गिव यू न्यूट्रॉन नंबर. ठीक है, तो अगर हम 1H1 की बात करें, हाउ मेनी प्रोटॉन्स आर देयर? 1. हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स? 1 minus 1 0, and mass number that's why is 1. What about ड्यूट्रॉन? प्रोटॉन वही रहेगा बिकॉज एटॉमिक नंबर तो सेम है. न्यूट्रॉन एक बढ़ गया, तो जब न्यूट्रॉन बढ़ गया तो उसका मास डबल हो जाएगा. एज अ रिजल्ट मास नंबर विल बी 2. So deuteron is also called heavy hydrogen. Deuteron के साथ जो water बनता है D2O is called heavy water, which is used in nuclear reactor. इसका भी एक ही प्रोटॉन होगा, सेम एटॉमिक नंबर. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे. मास नंबर would be 3. So because the mass is different, so that's why the physical properties are different. Like density would be different, melting point, boiling point, other properties, physical properties may be different. केमिकल सारी सेम होगी. और क्या हो सकते हैं? यूरेनियम का यूरेनियम इज 235 एंड और कौन सा होता है?
239? 239 तो नहीं, प्लूटोनियम होता है वो। 237 होता है ना। 238, 235? 235, 237। Okay. 239 तो उसका होता है ना, प्लूटोनियम का मास नंबर। Okay. Even plutonium is radioactive, no? हाँ, all these are radioactive only. Okay. But commercially, uranium 235 is used. क्लोरीन के भी दो होते हैं, सोडियम ऑक्सीजन ऑल्सो। ऑक्सीजन के कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, 16। और कौन सा होता है? 16 होता है, 17 होता है। देख लेना, यू हैव इन केमिस्ट्री में है सारा। नेक्स्ट इज आइसोबार्स। व्हाट आर आइसोबार्स? Isobars are those atoms which have same mass number but different atomic number. So different atomic number होगा तो chemical properties different होगी और position in the periodic table भी different होगी। लिख लो, isobars are those atoms. Isobars are those atoms of elements which have same mass number, which have same mass number but different atomic number. जैसे कि अगर हम इसकी बात करें 1H3, हीलियम के भी दो आइसोटोप्स होते हैं, He4 एंड He3। तो 1H3 एंड 2He3 दे आर बेसिकली आइसोबार्स। एटॉमिक नंबर 1 एंड 2 हो गया, लेकिन सेम मास नंबर हो गया 3 एंड 3। दीज आर आइसोबार्स। और एग्जांपल दो आइसोबार्स के। हम्म कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20। कैल्शियम का किसके साथ होता है? हाइड्रोजन, लिथियम जीरो सीरीज होती है ना, इनर्ट गैसेस वाली, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है वो? हीलियम, नियोन, आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 18। आर्गन 40 एंड कैल्शियम 40 है ना। दीज आर आइसोबार्स। Isobars might have, similar physical properties, but chemical properties are totally different, okay, because they're different element altogether. So isobars would occupy different places in the periodic table. किसका? हाँ, 17। ठीक है। Then you have same neutron number isotones. Those atoms of elements which have same neutron number are called isotones. Those atoms of elements which have same neutron numbers are called isotones. तो आइसोटोन तो तुम फाइंड कर ही सकते हो, खुद ही बना सकते हो। जैसे कि इसमें कितने न्यूट्रॉन है? इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स, है ना, 4 - 2। एंड दिस ऑल्सो हैज 2 न्यूट्रॉन्स। दीज टू आर आइसोटोन्स, same number of neutrons. Next is
atomic mass unit, 1 AMU. What is 1 AMU? It is 1/12th mass of carbon 12 atom. लिख लो. 1 AMU equals to 1/12th mass of C12 atom. तो कार्बन के भी दो आइसोटोप है ना, 12 and 14. तो 1/12th mass of C12 atom is equal to 1 atomic mass unit, and it is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. It is 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. Energy equivalence of 1 atomic mass unit. ये निकालना 2 मार्क का आ सकता है. इसकी definition 1 mark, it could be 2 or 3 mark. Find energy equivalence of 1 atomic mass unit. To find energy equivalence of 1 AMU. So you know this equation, E equal to mc square. यहाँ भी take m as 1 AMU. This is 1.66 10 to the power minus 27 kg. C, you already know speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. करो कैलकुलेट कितना आ रहा है ये अभी जूल में आएगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो. This is in joule at the moment. Convert into electron volt also. Hmm. हो गया? This will be in the joule at the moment. You can convert this into electron volt. So how to convert in electron volt? 1.66 10 to the power minus 11 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So this will be in electron volt.
This is 8. (166 into 900 by 160 कर लेते हैं. ये कट जाएगा. देखो क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके. It will be 9.34 into 10 raised to power 8. Yes, this result you have to remember. It will be 931.5 MeV. 10 to the power 6 is 1 million mega. So one atomic mass unit को जब भी तुम एनर्जी में कन्वर्ट करोगे, this is the energy equivalent of one atomic mass unit. If you convert one atomic mass unit into energy, it would be 931.5 mega electron volt. Mega 10 to the power 6 होता है. Or million electron volts. One atomic mass unit is equal to 931.5 million electron volts. So this energy equivalence का derivation आ सकता है. 2 to 3 marks. Size of nucleus. Radius of the nucleus is basically related to the mass number of the nucleus. उसका mass number कितना है? And it's like this, that radius is directly proportional to mass number to the power 1 by 3. लिख लो. It is found that radius of nucleus of an atom, radius of nucleus of an atom is directly proportional to 1/3 power of its mass number. 1/3 power of its mass number. And if you remove the sign, bring in a constant, it is R naught a to the power 1 by 3. Yes, R naught is a constant, 1.2 10 to the power minus 15 meter, where R naught is a constant, which is 1.2 into 10 to the power minus 15 meter. Question लिखो एक. Find atomic radius. Find atomic radius of the nucleus of an atom, whose mass number is 64. Whose mass number is 64. So 4.8 into 10 raised to the power minus 15. Mass number is 64. We can use the formula R naught a to the power 1 by 3. It is 1.2 10 to the power minus 15. 64 to the power 1 by 3. 64 is basically 2 raised to power or 4 raised to power 3, yeah?
It is 4 raised to power 3. 3 3 कट जाएगा. So radius would be 4.8 10 to the power. So this is the size of the nucleus. एक क्वेश्चन अक्सर आता है that 3 मार्क का आता है बोर्ड में, that prove that nuclear density is independent of mass number. लिखो क्वेश्चन. Show that nuclear density is independent of mass number of the atom. Three-mark question. And hence find nuclear density. तो न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होगा? मास बाय वॉल्यूम. राइट. मास ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकलेगा? न्यूक्लियस में वी हैव नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है. सो द टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस वुड बी m into a, because total number of protons and neutrons is a. m क्या है यहाँ पे? मास ऑफ वन प्रोटॉन और वन न्यूट्रॉन. लिख लेना. m इज मास ऑफ वन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन. वॉल्यूम कैसे निकालोगे? 4/3 पाई आर क्यूब. 3 ऊपर चला जाएगा. व्हाट इज ए? आर इज आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का होल क्यूब हो जाएगा. सो 4 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए. ए से ए कट जाएगा. ए से ए कैंसिल हो गया. मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉम मास नंबर ऑफ द एटम. उसके बाद ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, इनको सब्स्टिट्यूट कर दो. इट इज 1.66 10 to the power -27. 4 पाई आर नॉट की वैल्यू तो ऑलरेडी मालूम है. सो दिस नंबर विल बी ह्यूज. जो न्यूक्लियर डेंसिटी होगी बहुत ज्यादा आएगी. The nuclear density is so high that you can't even lift one spoonful of nuclear density. इतना ज्यादा डेंसिटी है उसका. बिकॉज नीचे -45 होगा, ऊपर प्लस जाके ऊपर +45 हो जाएगा वो. टेन टू द पावर 18 है ना. So nuclear density is really, really high. So this is worth 3 marks. Show that nuclear density is independent of mass number of an atom and also find its value. जैसे नॉर्मल डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस का सिर्फ अगर डेंसिटी निकालें बहुत ज्यादा होता है. जैसे न्यूट्रॉन स्टार है, न्यूट्रॉन स्टार की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, सिर्फ न्यूट्रॉन्स होते हैं वो, और ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करते हैं आपस में एक दूसरे को, तो फिर वो बन जाता है ब्लैक होल. आर नॉट की वैल्यू डाल दी ना, 1.2 10 to the power -15. निकाल लो उसको, जो भी आएगी उसको याद कर सकते हो या उस समय निकाल लेना. राइट देन, नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. ये खत्म हो गया चैप्टर. विल स्टार्ट विद सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस. एंडिंग द क्लास. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir.